माई सिस्टर इज स्मार्टर देन मी। ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है जो हमने अक्सर देखा है। बेटर देन मी, टॉलर देन मी, स्मार्टर देन मी। यू नो, देन के साथ मी यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज देन हेयर इज एक्चुअली ए कंजंक्शन। सो ये देन यहाँ पे दो डिफरेंट सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है। आई एम स्मार्ट एंड माई सिस्टर इज स्मार्टर। सो द राइट सेंटेंस शुड बी लाइक माई सिस्टर इज स्मार्टर देन आई और आई एम, दोनों ही कंसीडर किए जा सकते हैं। कारण ये है कि of course there is no point of writing my sister is smarter than I am smart। तो ये जो स्मार्ट है यहाँ पे दो बार यूज किया जा रहा है, रिडंडेंट है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है टोटोलॉजी, और टोटोलॉजी को हाईली क्रिटिसाइज किया जाता है कि आपको रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश स्पेशली। दैट्स व्हाई द करेक्ट सेंटेंस इज my sister is smarter than I am, my sister is better than I am, my sister runs faster than I do। I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स मैं रेगुलर बेसिस पे अनअकैडमी पे पढ़ा रही हूँ। I have been part of अनअकैडमी for almost 4 years now। अगर आप भी मुझसे अनअकैडमी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज चेक माई प्रोफाइल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। बाय द वे, we have launched the brand new printed notes for CDS examinations। तो अगर आप CDS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, so be the iconic learner at Unacademy for minimum 6 months so that you can get these printed notes at your doorstep। Yes, Unacademy will deliver these notes at your home। So I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। Do not forget to like it, share it and subscribe to this YouTube channel। Adios!